Yes, good afternoon everyone. Okay. So yes, Venkatesh, good afternoon. So today we are going to start the current affairs session for the month of July. Okay, July 2025. In fact, this is PSP 2026, but we are going to start the current affairs for the month of July 2025, means of the previous years. ठीक है, शुरू करते हैं. जब तक और भी बच्चे आ जाएंगे, लेट मी डू द वेरी इंपॉर्टेंट रिचुअल दैट आई हैव टू डू नो मैटर वट एवर द सिचुएशन इज. ठीक है, तो यू ऑल नो दैट द PSP इज ऑलरेडी देयर. PSP इज trying to prepare the students who are planning to appear in the 2026 prelims examination. So what we are doing here, this is the process, the program outflow, where on Mondays we are conducting the marathon test. Okay, marathon sessions have been conducted on Mondays, and usually on Mondays we are conducting 2 marathons. Okay, in these marathon sessions we will sit with you. We have a huge bank of questions, and we will share the questions of the concerned topic with all of you, and all what you have to do is you have to mark these answers on the basis of 3 things, that either your answers must be the confident ones, it must be the smart guess, blind guess, or there are few questions that are meant to be left ones. Okay, on the basis of this, what we are planning if our students are ticking off, whether the ticking of any of the answers, their confidence must be boosted up. Okay, and this is a practice so that they can improve themselves. They can see how they are making the smart guesses, and if smart guesses have to be made, they have to be more cautious. Overall, this is a phenomena, this is a process where you are learning how to utilize the time. Okay, means you are improving your accuracy as well as improving some new mechanisms to mark the answers correct. Okay, so Mondays ko we have a marathon session, and along with the marathon session we will be sharing some PDF to you. This would be the self-study PDF, and this self-study PDF would be of current, not of current, but static portion, plus there will be a PDF for current affairs also. Okay, and similarly on Tuesdays as well as on Wednesdays there will be the self-reading PDFs, and there will be the current affair PDFs. Along with it, once you are done with your self-studying PDFs, what you can do, you can assess yourself. You just have to log into the portal, and there will be a revision test. These revision tests will get activated after 7 PM in the evening. अगर आपका हो गया है पूरा सिलेबस, if you think yes, I am done with what I have to do on this particular day, then what you can do, you can switch to the revision test. यहाँ पे देखो कि whatever you have read, क्या वो have you been able to memorize it or not. ठीक है, the same thing is now on Wednesday also. On Thursdays there will be another marathon test, and along with the marathon test, this time you will have a PYQ session. Means the PYQ, the questions that have been asked in the UPSC from 2013 to 2020-25, some of the questions of any particular topic, whatever the week is. I suppose this week was of geography, so we have given the practice test of geography PYQs. ठीक है, तो geography PYQs में students ने अच्छा किया है as compared to what they have been doing in the previous ones, and I think slowly आप लोग भी adapt हो गए system के साथ, so you are feeling quite comfortable. ठीक है, then on Fridays there will be a revision test as well as the self-reading PDFs will be given to you, same approach. And on Saturdays
there will be the revision day. Revision day means you have to concentrate the entire subject that you have studied in this particular week, and finally you have a current affairs session of 1.5 hours or 2 hours, so that we could discuss and initiate some discussion on some of the selected topics of current affairs. And yes, finally the Sunday, that is the D day for you, because on this day you have to appear in the sectional test. Kal hoga, kal you have a sectional test of geography, so prepare yourself for it and appear according to the time. Okay. So overall in this PSP 2026, what we are offering? We are offering 13 sectional tests, we are offering 13 practice PYQ tests, 39 marathon sessions, 39 revision tests, 10 full length tests that we have named as Prayas, 6 CSAT sectional tests, 5 CSAT full length tests with having 80 questions each for each of them, and 5 full length tests of current affairs. Along with it, we have already recorded some of the videos for the PYQs from 2013 to 25. If you want to watch those videos, what you can do, you can straight away go to the Edukemy's YouTube channel, and there is a playlist there in which we have covered all the PYQs from 2013 to 2025. Geography की अलग playlist है, environment is a separate one, then we have a polity, history, culture, सब है वहाँ पे, ठीक है. And yes, obviously there are few current affair classes, and they would be around 12, and yes, some sectional test discussion and some of the important recorded videos. Sir is also recording videos on rivers, on recently he has recorded about the Arctics, ठीक है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो. That is all available on YouTube. ठीक है. So now what we have to do today, we have to start the current affairs. ठीक है. So the very first topic that we are going to discuss today is that will be a mitochondria donation treatment. Mitochondria donation for treatment. Okay, this one is an important topic because this has been asked previously in the UPSC examination. एक बार UPSC has asked about this question. There is a possibility that the same can be asked again, और हो सकता है कि same मतलब वही fact पूछ ले that it has asked in the previous years. So it was in the news for few reasons, because in UK there was a news that a child is born out of 3 parents, and because the news was that the child was born out of 3 parents, so it sparks curiosity and discussion, and therefore it became a news. तो है क्या इसमें? Mitochondrial donation treatment. So this is basically about giving birth to the babies. You know, the lot of IVF, that is in vitro fertilization, is taking place these days. Okay, IVF is a mechanism that is used for to give birth to the babies. That means in vitro fertilization. Fine. So mitochondrial treatment क्या है? There are 3 persons in this case. One would be, suppose we have a father. ठीक है? We have mother, and we have some other lady who is a donor. ठीक है? 3 persons are there. One is father, other is mother, and the third person or third lady is the one who is going to donate her egg, or we can say the mitochondria. Now the case is, देखो, every cell or egg, ठीक है? I'm talking about the egg of woman. Egg has 2 type of DNAs. One DNA is nuclear DNA, ठीक है? And other DNA is mitochondrial DNA. Mitochondrial क्या होता है? Mitochondrial के लिए बोला जाता है that it is called as the powerhouse of the cells, or they are the ones, you can say that these are like batteries which are providing energy to the body. So mother has egg. Egg has 2 things. One is nuclear DNA, other one is mitochondrial DNA.
Similarly, this lady also has an egg, and her egg has nuclear DNA and a mitochondrial DNA. But the catch here is that the mother has a mitochondrial DNA which is a faulty. Okay, this is a faulty DNA. This is a DNA which is a faulty, while the donor has a mitochondrial DNA which is a healthy. ठीक है, the lady donor has a healthy nuclear DNA as well as healthy mitochondrial DNA, while contrast to this, the mother has a nuclear DNA and mitochondrial DNA, but a mitochondrial DNA is a faulty DNA. Faulty DNA means if mother persists on having the child with the same mitochondrial DNA, there might be a possibility that a child who is going to born out of this mother, he or she might have a weak brain, he or she might have a weak muscles, or there is a possibility that this child may be vulnerable to some rare disease like heart disease हो सकता है, brain disease, lot of disease जो है आपका, he or she is vulnerable to that. Now what will happen? What they will do? They will, and one more thing is that जो nuclear DNA है, this nuclear DNA controls 99% of the genetic traits. 99.9% of genetic traits is controlled by this nuclear DNA. Means the complexion, means the color of the skin, eyes, or intelligence. Most of the things जो है आपका that are being controlled by this nuclear DNA. While the mitochondrial DNA भी है, but its control is very less. ठीक है, its control is about only 0.1 something like. तो अब क्या है, this woman, the mother has a mitochondrial DNA which is a faulty DNA. अब क्या होगा? From the egg of the mother, we will remove this nuclear DNA. This will be taken here. ठीक है, this will also be removed out, and in the donor mother, we will fix this nuclear DNA of a mother. Nuclear DNA of mother, plus we will be having the mitochondrial DNA of donor. ठीक है, this will be within the egg of a lady donor. ठीक है, now we have an egg in which there is a nuclear DNA of a mother plus the mitochondrial, that is the healthy DNA of a donor. Now what we will do? We will interact this egg with sperms. ठीक है, and now it will form this will be interacting with it, and it will result in the form of zygote and then baby. Fine. So now this is about the mitochondrial DNA treatment. यहाँ पे क्या किया है? The faulty DNA remains there. We have taken the nucleus DNA out of a mother, and we have fixed this nucleus DNA in the egg of the healthy donor. Now we have a nuclear DNA of a mother plus the mitochondrial DNA of a donor, and with this we are interacting it with the sperm, which results in the formation of zygote, and that results in the formation of healthy baby. So my question to you is, which traits would be more? Does this baby is going to have a traits of donor, or does this baby going to have a traits of her or his real mother? Yes guys, because मैंने यही चीज आपको बताई कि nuclear DNA contains 99% of all the traits. So there is a high possibility that 99%, obviously 99.99% traits would be of mother and father.
मदर एंड फादर, ठीक है, यस, डीएनए ऑफ मदर. नाउ यू गाइज माइट क्वेश्चन के सर ठीक है द डीएनए है, बट you don't talk about the DNA of male, mitochondrial DNA. Why you are not talking anything about the mitochondrial DNA of male also? देखो मेल में भी हमने देख लिया, ऊपर मेल है, मेल का जो है, मेल also has a nuclear DNA as well as a mitochondrial DNA, but the mitochondrial DNA of male is in the tail of the sperm. यहां पे है mitochondrial DNA is within the tail of the sperm. And as the major work of this DNA is to push, to provide power, and it works as the powerhouse of the cell. So its entire energy is being exhausted in pushing this sperm to enter into the egg. And that's why this mitochondrial DNA got exhausted. This got exhausted within the process, and that's why it does not come within the picture of this entire scenario. Or suppose कोई mitochondrial DNA is so much strong, sperm वगैरह count बहुत अच्छा है, there might be a possibility that mitochondrial DNA will enter inside that, and whenever there will be an interaction, this DNA would interact, that there is a foreign particle which has entered there, and it would discard it. That's why जो mitochondrial DNA है of a male, it is no more of a importance here. And always if the disease is going to pass, the disease will pass only from mother to the son or to the baby girl. ठीक है, समझ में आई ये बात? Any doubt in this? Then we will move ahead regarding the same thing. समझ में आ गया, ठीक है. Another thing is spindle mitochondrial transfer. Spindle mitochondrial transfer means that in this case, the mitochondria that we are transferring from one to other, this happens before fertilization. Before fertilization means the egg is not fertilized, whatever case I have discussed above, that is the case of spindle mitochondrial transfer, in which this is before the fertilization. The fertilization have not taken place. We just have taken the egg of a donor, we have inserted the nuclear DNA of a mother, and now the egg is having a nuclear DNA of a mother as well as a healthy mitochondrial DNA of a donor. ठीक है? And then we are interacting it with the male sperm so that it could turn into a zygote. वो बोलते हैं spindle mitochondrial transfer. There is another case, that is pronuclear mitochondrial transfer. इसमें क्या होगा? Suppose father is here, father and mother, father sperm, mother eggs, they have gameted, and now it has become an embryo. I can say this is embryo A, and this embryo A has a good, or I can say good nuclear DNA, but a faulty mitochondria DNA. ठीक है? In another case, there will be father plus lady donor egg that is being interacted in laboratory, and we will have a embryo B, ठीक है, in which there is a good nuclear or a healthy nuclear DNA plus a healthy mitochondria. ठीक है? दिस इज केस है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर. सो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें वी विल टेक this good nuclear DNA out here, and this will be removed away, and this will be inserted here. So finally we will be having an embryo B. Embryo B will have a good nuclear DNA of mother
plus we will be having a healthy mitochondrial DNA of donor. ठीक है, समझ में आ गया? So there are two cases. One case is that we have a spindle transfer. This transfer takes place before the fertilization is yet to occur within the sperm as well as the eggs. While in the other case, that is the pronuclear mitochondria transfer, here it has been done once the fertilization is already over. ठीक है, समझ में आया? Anyone who is figuring it out, difficult to understand what exactly is happening here? यहाँ का वहाँ का यहाँ. Done. ठीक है. So donor is woman only. Yes, donor तो woman ही होगी because woman has only an egg. A male cannot be a donor. ठीक है, egg चाहिए यहाँ पे. So now the question that they have asked in the UPSC, the question is this. Yes, read this question. In the context of hereditary disease, consider the following statements. Passing on mitochondrial disease from parent to child can be prevented by mitochondria replacement therapy either before or after in vitro fertilization of the egg, and child inherits mitochondrial disease entirely from mother and not from father. Those who are giving B, why they are giving option B here? Why the first one is incorrect according to them? Some of you are giving option B as an answer. Before or after दोनों लिखा है ना? Here it is written after. नहीं, before भी तो लिखा हुआ है. आंसर इज सी. जो मैंने सेकंड केस बताया आपको, वन इज द स्पाइंडल ट्रांसफर एंड अनदर इज द प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर. इन प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर, that transfer was once the fertilization is done, and the spindle transfer is before the fertilization is done. So before and after both is being completed, both is being included here. So what they are saying is passing on mitochondrial disease from parent to child can be prevented by this therapy either before or after in vitro fertilization. Means पहले करो या बाद में करो, in both the cases you can prevent this by having a replacement theory. तो ये statement तो ठीक है, यही बताया मैंने आपको. And the next one is a child inherits mitochondrial disease entirely from mother and not from father. That's also true, because I have already explained that mitochondria of a father is in the tail of sperm, and that energy is being used up in pushing this entire sperm, due to which there is hardly any impact on the child. ठीक है, so the mitochondrial disease will entirely shift from mother to the son. ठीक है, इसमें कोई डाउट रहा नहीं होगा. न्यूज में तो था ये, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज 2-3 साल से है ये ट्रीटी, दैट इज द प्लांट्स ट्रीटी. यस, प्लांट्स ट्रीटी. फाइन. ठीक है, नेक्स्ट इज प्लांट्स ट्रीटी. ठीक है, द क्वेश्चन वाज, द कॉन्टेक्स्ट वाज दैट दिस प्लांट ट्रीटी वाज इन अ न्यूज because lot of farmer groups and organizations are opposing against some of the amendments that have been introduced in this treaty. So first we need to understand what exactly is a plants treaty. You all know that there is an organization, the name of the organization is Food and Agriculture Organization, and in 2004 there was a session that was conducted in Spain. Spain में 2004 में a city is there, that is Madrid, in which they have conducted a session. The session was in fact successful. In this session a treaty got
traced out, or we can say the treaty was enacted, in which it was decided that this treaty will exclusively work to encourage the preservation and conservation of genetic resource. ठीक है, ये क्या करेंगे, ये प्रिजर्वेशन करेंगे एंड कंजर्वेशन करेंगे जेनेटिक रिसोर्स, so that they could achieve food security and they could carry out agriculture against any kind of climate stress. दो ऑब्जेक्टिव थे इनके. One was that we need to preserve and conserve the genetic resources so that we could ensure a food security in the world, plus we could also know how to carry out farming in this climatic stress like conditions, like global warming hai, heat waves hai, droughts are happening, a lot of climatic stress is there. And this treaty is an internationally legally binding treaty. This is internationally binding treaty. ठीक है, some of you might be asking, sir, what are genetic resources? Genetic resource basically क्या है? You know कि we have multiple variety of rice that are available in form of seeds. Similarly, Mexicans also have many types of wheat, ठीक है, या millets. Ethiopians has lot of sorghums. तो ये जो genes हैं, genetics available है in seeds का, they have been kept and preserved in their own countries. हमारे यहाँ भी seed banks are there. Seed banks हैं, conservation centers हैं, where we are keeping the seeds of our rice, wheat, millets and all. And the same is being used when the season arrives. Similarly, in other countries में भी, चाहे Brazil हो, Mexico में, they also have a same kind of setups, and they all have been kept within the centers. So this is called as genetic resource, where we have a genetics available for plants like wheat, millets, rice, ragi and all. So there are few provisions in this treaty. The first is MLS, that is multilateral scheme. Multilateral scheme है जो इसकी. What is the meaning of multilateral scheme here? Means every country, either it is India, Brazil ho, Mexico ho, all are welcome that they must share the genetics, or they must share the genetic resources with each other. Okay? It is all about sharing the genetic resources so that scientists can carry out research. Scientists can carry out some conservation practices. ठीक है, तो इसमें यही बोला गया है कि we have to share the seeds with all international communities. Next is SMTA, that is Standard Material Transfer Agreement. ठीक है, इसमें है एक Standard Material Transfer Agreement. What this means? कि suppose we have a variety of rice available with us, basmati या कोई भी, pusa and all, and tomorrow if some multinational corporation takes this variety of rice, do some modification within it and start selling out in the international markets on a commercial basis, and they are earning a huge amount of profits. So what they have to do, if they are earning the profits, they have to share some part of this earnings in the benefit sharing fund that is being made during this treaty. ठीक है, तो means इसका सबसे पहला ये है कि any MNC earning through the modifications in the seeds has to share its benefits. Seeds share funds and benefit in benefit sharing fund. ठीक है, this is a fund, benefit sharing fund, that was created during this treaty. ठीक है, ये था. Plus there was another clause
that no country or no multinational corporation can claim the ownership. That is, they cannot go for patenting of any of the product that they have picked from this sharing of resources. ठीक है? No MNC or no sovereign country can claim ownership or patent. ठीक है, कोई भी एमएनसी हो, कोई भी कंट्री हो, दे कैनॉट क्लेम ओनरशिप, दे कैनॉट गो फॉर पेटेंटिंग आउट ऑफ एनी जेनेटिक रिसोर्सेज दैट हैव बीन शेयर्ड बाय वन और द अदर. ठीक है, और इसमें एक बेनिफिट शेयरिंग फंड वाज क्रिएटेड, वो तो बता ही दिया मैंने. द मनी दैट वाज के मनी कलेक्टेड इन बेनिफिट शेयरिंग फंड, ठीक है, दैट इज ये वाला फंड, must be used for training of farmers and for the conservation of indigenous techniques available all over the world, and for the conservation of indigenous techniques. ठीक है, lot of indigenous techniques are available all over the world. ऐसी ऐसी टेक्निक्स हैं दैट वी इवन डोंट नो. इनफैक्ट मैं 2-3 दिन पहले ही एक टेक्निक्स देख रहा था कि इन आवर होम्स वी आर मेकिंग द दही ओनली बाय एडिंग अ स्मॉल टेबल स्पून ऑफ दही इनटू इट. ठीक है, यू कैन गरम किया आपका दूध को एंड अ टी स्पून ऑफ दही इज बीइंग एडेड इनटू इट सो दैट यू कैन मेक अ कर्ड. ठीक है, बट देर आर सम इंडिजिनियस टेक्निक्स, कुछ ट्राइब्स हैं, कुछ और पीपल हैं दैट दे आर मेकिंग इट बाय चिली, ग्रीन चिलीज. ठीक है, कोई है यहाँ पे मिर्ची से दही बनाने? अच्छा, आप लोगों को पता था? मैं पहली बार ही देखी वो वीडियो. एनीवन एल्स हु इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग एट देयर होम्स? पता था? ओके ओके, फिर तो आप लोग उसकी डंडी से, हाँ हाँ, यस, उसकी जो डंडी है, जो पीछे होती है उसकी डंडी, अकॉर्डिंग टू देम देयर आर लॉट ऑफ लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर अवेलेबल इन दैट डंडी, दैट इज द टेल और यू कैन से द हेड ऑफ दिस ग्रीन चिली. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन मेक द कर्ड आउट ऑफ इट. सो देयर आर लॉट ऑफ इंडिजिनियस टेक्निक्स. सिमिलरली राइस की एक इंडिजिनियस टेक्निक है, दैट इज द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन. ठीक है, बहुत फेमस है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, दैट इज बीइंग मेजरली प्रैक्टिस्ड इन द एरियाज ऑफ फिलीपींस, मलेशिया एंड ऑल. ठीक है, यस यस आकाश, देयर आर लॉट ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट विद इन द ग्रीन चिली एंड दे आर बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर इट. ठीक है, तो मनी कलेक्टेड इन बेनिफिट शेयरिंग फंड इज टू बी शेयर्ड फॉर ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स, फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस टेक्निक. एक और है इसके अंदर, दैट इज आर्टिकल 9 of this agreement. Article 9 of this agreement says that farmers of all over the world, means all countries, are free to use, to save, to reuse and exchange of seeds. ठीक है, if the farmer from Odisha comes and he might be sharing the special type of these genetics of rice with any of the farmers of Uttar Pradesh, and if they are growing and they are making the money, so that would be a part of it. They would not become under within any kind of offense. ठीक है, no offense would be there. So farmers are free, farmers of all countries are free to use, reuse and exchange the seeds. This is being written within the article 9 of agreement. तो ऐसा कुछ आ सकता है उनका कि in this agreement or in this treaty even farmers are barred from using, saving, reuse and exchange of seeds. ठीक है, ये हो गया आपका article 9 of agreement.
Another is there is a NX1. NX1 क्या है इसमें? NX1 is the list of 64 food and non-food items in it. मतलब non-food मतलब fodder, food and fodder items in it. ठीक है, total of 64 crops like rice, wheat, कुछ के नाम बताता हूं मैं जो मैंने देखे हैं उसमें. वो है राइस है, wheat है, potato, millets, sorghum. So in such a manner, the list is of 64 genetics. Means there's a list of 64 genetics. For all of them, this particular treaty is being applicable. ठीक है, ये हो गया. अब what they are saying कि why there is a protest now, or why the farmers in India or in developing countries are up in arms. ठीक है, सबसे पहला है कि expanding the list. Although this is not a cause for this protest. One is that they want to expand the list. Some amendments have been proposed in which they are saying that the list must have more than 64 items. ठीक है. Second reason, second thing that is being included in the amendment is, and that is also a contentious one, that they are saying that from now onwards there will be a standard rules. Means there will be a standard rules that will be applicable to all the countries. And what will be the standard rules? There will be a book, there will be a manual in which these rules will be written, and the rule will say that the governing council of this treaty will decide. This governing council of treaty will decide whom to share, when to share these genetic resources. ठीक है, यहां पे प्रॉब्लम है उन सबको. Why the problem is there? Because if a standard rule is being applied all over the world and governing council will decide when these genetics has to be shared or to whom this has to be shared, then there will be the loss of sovereignty for the Indian governments. Because although the process will get simplified, because abhi kya ho raha hai, abhi if somebody wants to share any kind of a rice variety or wheat variety or any kind of a genetics, first the matter goes with the biodiversity management committee. Biodiversity management committee approves karegi, so then it goes to the state biodiversity boards, then it goes to the national biodiversity board, and finally the seeds are being handed over to someone. If somebody, either it is scientist community or some multinational corporations, if they are interested, then it has been handed over to them. So it is a time taking process. और आपको पता है इंडिया में वन हिरार्की से दूसरी हिरार्की आते आते जो है बहुत जो है टाइम लग जाता है. So that is what they are saying, that we will simplify the rules, we will reduce the bottlenecks, but this will be against the sovereignty. इसको जो है against sovereignty माना जा रहा है, कि this will be against the sovereignty and we will have a loss of sovereignty in such cases. Plus you know कि agriculture जो है, the agriculture is an issue that comes within the state list. So you cannot share or you cannot allow any other multinational corporations or countries without having the consent of state. So again जो democratic issue में सबसे बड़ी चीज होती है कि this will also be the dilution of federal powers. ठीक है, तो इस रीजन की वजह से this has been in the news and it is turning out to be a controversy for the groups. ठीक है, समझ में आ गया? इसमें कुछ है? चलें आगे की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक. कोई है इशू?
चले फाइन, ठीक है. So next is, although the topic is easy one, but I have want to highlight it so that you cannot ignore, you cannot miss this topic. This is Kharai camel. ठीक है, Kharai camel. Yes, only sir also explain cat bond and weather derivatives. Okay, Piyush, if time permits, we will do that. कैट तो करा दूंगा, वेदर डेरिवेटिव्स का भी देखता हूं. खराई कैमल, देखो खराई जो है, दिस खराई कैमल और द वर्ड खराई हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम खार. खार मींस खारा पानी, खारा मींस सलाइन वाटर्स, ठीक है. एंड these Kharai camels are known to be found in the Kutch region of Gujarat. और कच्छ रीजन में सबसे ज्यादा अगर वहां को मिलेगा तो दैट वुड बी मालधारी कम्युनिटीज. ठीक है, मालधारीज आर डोमेस्टिकेटिंग दीज एनिमल्स. और ये क्या करते हैं, दे आर द वंस विच दे आर द रेयर स्पीशीज ऑफ कैमल्स विच स्विम थ्रू द सलाइन वाटर्स एंड दे आर फीडिंग और दे आर डिपेंडेंट on mangroves. They are dependent on grazing. I can say mangroves are the grazing grounds for these camels. ठीक है. Other thing is that it is an animal which lies within the endangered, or the IUCN status is endangered for Kharai camel. ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है. although the question was easy, but you know easy questions also becomes tough when you are not aware of these things. endangered है, प्लस इसके इस पर्टिकुलर एनिमल के लिए वन मोर ऑर्गेनाइजेशन इज देयर दैट हैव लिस्टेड इट एज थ्रेटन्ड. थ्रेटन्ड की लिस्ट में रखा है इसको नेशनल ब्यूरो of animal and genetics resource. ठीक है, National Bureau of Animal Genetic Resource has also included this animal in the list of threatened ones. ठीक है, तो ये है. एक और चीज थी पीछे की तरफ, द प्लांट ट्रीटी एक्ट, मुझे याद आ गया. Plant treaty is related to the Nagoya Protocol of Biodiversity Act 2002. अगर प्लांट ट्रीटी की बात करूं तो इसको कंट्रोल कौन करता है, हमारे यहाँ जेनेटिक रिसोर्सेज को. जेनेटिक रिसोर्सेज आर बीइंग मैनेज्ड अंडर 2 लॉज. प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं. वन इज अंडर प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी एक्ट and another is Biological Diversity Act. ठीक है, तो there might be a possibility that they will ask कि which of the following laws and acts are related to the preservation and conservation of plant genetic resources or plant treaty. So these are the two acts, that is Plant Protection Variety Act as well as the Biological Diversity Act 2002. They both have been linked with this treaty. ठीक है. खार word comes from saline. They are generally found in Kutch region. Maldharis are the basically the tribes बोला जाता है इनको. They are ones who are domesticating it. They are dependent upon the grazing of mangroves. Endangered हो रहे हैं IUCN status में, and they have also been listed in the threatened list of National Bureau of Animal and Genetic Resource. अगर कुछ इसमें घुमाने के लिए अब है तो वो यही है कि they might write vulnerable and all in National Bureau of Animal and Genetic Resource. ठीक है, ये है आपका. प्लस now they are declining in number. Why? The major reason for their decline is the establishment of cement factories. The major reason for their decline is the establishment of cement factories, and as the cement factories are being established, the mangroves are getting depleted. ठीक है. As a generalized word is that the industrialization is one of the reasons for the decline in the number
for decline in the number of Kharai camel, but if we go specifically, we can say that the increase in the number of cement industries is one of the reasons for the depletion of mangroves, and that is eventually resulting in the decline number of camels, Kharai camels. ठीक है, इसके अलावा although this is a Kharai camel, fine, और खराई कैमल्स की बहुत सारी स्पीशीज है, ऑल्दो कोई इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, और सबको कैमल्स ही बोल देते हैं. लाइक वी हैव वन मालवी. मालवी कैमल्स आर फाउंड इन मध्य प्रदेश. ठीक है. मेवाती कैमल्स, मेवाती इज ऑल्सो अ ब्रीड. मेवाती कैमल्स फाउंड इन हरियाणा, पंजाब एज वेल एज इन राजस्थान. ठीक है. पंजाब का भी थोड़ा सा एरिया अगर आप देखोगे, भटिंडा एंड ऑल, दैट इज क्लोज टू द गंगानगर, वहां भी थोड़ा डेजर्ट और आपको टीले दिख जाएंगे, जैसे रेगिस्तान में टीले होते हैं वैसे वाला दिख जाएगा. ठीक है. वन मोर कैमल, यू कैन सी द बैक्ट्रियन कैमल्स. Bactrian camels are found in the Nubra Valley of Ladakh. Nubra Valley of Ladakh. And this is the, yes, Devangana, this is the only camel which can swim in the waters, and that too in the saline waters. Means they are the ones who are thriving and surviving in the brackish waters. ठीक है, लिख लो इसको. देन आई विल शो यू द क्वेश्चन दैट यूपीएससी हैज आस्क्ड इन 2021 आई थिंक अबाउट खराई कैमल. प्रोटेस्ट इज इन इंडिया ओनली. यस आकाश, करंटली द प्रोटेस्ट, हमें तो अपने ही यहाँ का पता है, ऑल्दो मेनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज आर ऑल्सो एक्सप्रेसिंग रिजर्वेशंस ओवर इट. तो प्रोटेस्ट सिर्फ यहाँ हमारा तो यही हो रहा है, एंड यस सम डेवलपिंग कंट्रीज हैव सम रिजर्वेशंस, लेकिन वहां के प्रोटेस्ट की न्यूज अभी तक नहीं आई. ठीक है. डिक्लाइन ऑफ मैनग्रूव्स इंपैक्ट देयर पॉपुलेशन. यस, बिकॉज उनका तो खाना पीना उसी पे ही है ना. दे आर फीडिंग ऑन मैनग्रूव्स, एंड ऑब्वियसली इफ द मैनग्रूव्स आर डिक्लाइनिंग तो देयर नंबर विल ऑल्सो गेट डिमिनिश. ठीक है. अरे मैंने क्वेश्चन तो इंक्लूड किया था पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा इसमें. Okay, sorry, I thought I have included this. The question was simple, that it is the rare species that can swim in water. Other point was these are the animals that are relying on mangroves, and third one was these camels are not domesticated and they are the wild ones. ठीक है, इसमें दो स्टेटमेंट तो ठीक है. फर्स्ट वन इज दैट यस दे आर रिलाइंग ऑन मैंग्रोव्स, इट इज द रेयर species of camel that can swim in water, and third point was incorrect because they are domesticated. They are domesticated by मालधारी communities. ठीक है, तो खराई कैमल के बारे में यही. नेक्स्ट इज सम ऑफ यू हैव सेंट मी ए मैसेज के सर ये वाला जरूर कराना है एंड ऑल. दैट वाज अबाउट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. Yes, certificate of deposits have fallen in the last few years. That's why it has been in news. Certificate of deposits जब हम कर रहे हैं तो कुछ और भी कर लेते हैं इसमें. One is commercial papers. Commercial papers. क्या होता है commercial papers? Anyone बताएगा मुझे कि what are commercial papers? Certificate of deposits we will do after the commercial papers.
एनी आइडिया? नो आइडिया? कोई आइडिया नहीं है? ठीक है, इशूड इन मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख, प्रोमिसरी नोट रेज, हाँ वो तो ठीक है। देखिए कमर्शियल पेपर्स मतलब क्या है, सपोज देयर इज अ बिग कंपनी विच हैज गुड क्रेडिट रेटिंग्स, ठीक है, एंड इट नीड्स बेसिकली कमर्शियल पेपर जो है ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में आता है, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, ठीक है। कमर्शियल पेपर्स मींस there is a big company that needs money immediately, so instead of going to the banks, now the company is saying to some of the individual investors, some of the high profile investors like high net worth individuals, or it can reach out to the multinational corporations also, some NRIs, that if you give some amount of money to us, we will give some interest on that money, ठीक है। suppose example ले रहा हूं, suppose Tata is there and Tata says कि we want 100 crore rupees, ठीक है, we want 100 crore rupees, and that is why it has reached out to some of the people. Who all can reach out? It can be a individual investor, but this individual investor at least must be a high net worth individual, क्योंकि 100 करोड़ रुपए ऐसे तो किसी के पास मिलेंगे नहीं. It must be it can be a multinational corporation or MNC. It can reach out to the mutual funds, ठीक है. It can reach to the institutional investors, or it can reach out to the कौन रह गया, NRIs, ठीक है. Here company wants 100 crore rupees and they have a promise, they have a promissory note, as you are saying कि promise होगा सर, कि they are not giving any collateral, ठीक है. There is no collateral in this, neither they are going to give some bonds to them, nor they are going to give some property, some building, gold, anything. No, there is no collateral there. They just give a promissory note. Only a promissory note will be given to them. Yes, these 100 crores पे we will give you after some time, we will give you 150 crores or whatever. ठीक है, मैंने तो ऐसे नंबर लगा दिया इसको. We will give you 110 crores or 150 crores. So this is the promissory note that is used by the private companies. Instead of going or reaching out to the banks, they prefer to reach out some other investors. ठीक है, क्यों? क्योंकि बैंक में तो दे हैव टू गो टू द रेगुलेटर, दे डोंट वांट टू गो टू द रेगुलेटर, बिकॉज अगर वो रेगुलेटर के पास जाते हैं तो वहां पे मनी टेकन, लोन एंड ऑल होता है, दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन देयर बैंक बैलेंस शीट्स. दे डोंट वांट दैट दिस मस्ट बी रिफ्लेक्टेड विद इन देयर बैलेंस शीट्स, दैट्स व्हाई दे आर इग्नोरिंग द बैंक. और दूसरा, बैंक का जो प्रोसेस है दैट इज अ टेडियस प्रोसेस, दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, ठीक है. तो दे आर इग्नोरिंग एंड दे आर एलिमिनेटिंग द मिडलमैन हियर. They are straight away going to the investors, asking the money from them. And basically जो इसका time duration है, the maximum time that a company gives for these commercial papers is 270 days. ठीक है, 270 days is the maximum that they can give into this. इसमें एक और चीज ये है कि कोलैटरल नहीं दिया, यस, प्रोमिसरी नोट है मैक्सिमम, यस. एंड दीज कंपनीज कैन यूज दिस मनी फॉर शॉर्ट टर्म पर्पसेस, लाइक दे कैन यूज इट टू पे सैलरीज, दे कैन यूज इट टू मैनेज इन्वेंट्रीज, और दे कैन यूज इट टू बाय सम रॉ मटेरियल, ठीक है. बट दे कैनॉट यूज इट फॉर बिल्डिंग, दे कैनॉट यूज दिस मनी टू बिल्ड अ फैक्ट्री, दे कैनॉट यूज इट टू बाय न्यू मशीन. ये काम इसमें नहीं करने हैं,
ठीक है, कमर्शियल पेपर में ये काम नहीं करने हैं. दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, यस, एंड दीज कम विद इन द लिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, क्योंकि 270 दिन के लिए दिया जाता है मैक्सिमम. एंड यस, you can use it to pay salaries, you can use it to manage your inventories, you can use it to buy raw material, and for this you can approach to the institutional investors, mutual fund groups, individual investors can also invest, NRIs can also come into this. Inventories मतलब जो एक कंपनी है, and there are a lot of things there कि भाई suppose AC making company or fridge making company is there, तो उनके पास फ्रिज के लिए फ्रिज का डोर, फ्रिज फ्रीजर, सम ट्रेज दैट इज बीइंग इंसर्टेड इनटू इट, तो दीज आर इन्वेंटरीज. ठीक है, उन सामान को मैनेज करने के लिए दे कैन यूज दिस मनी. ठीक है, लिखो इसको फटाफट. एक मिनट, कहां पे? ठीक है, बता देते हैं. फाइन, तो ये है. ऑल्दो ये जो कमर्शियल पेपर्स हैं, दीज हैव बीन रिलीज्ड ओनली ऑन द गुड क्रेडिट रेटिंग कंपनीज, बिकॉज इट इज द ट्रस्ट और इट इज द लॉयल्टी ऑफ अ कंपनी. जिस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, लेना देना अच्छा है, उन्हीं के लिए कमर्शियल पेपर्स कैन बी रिलीज्ड आउट. फॉर एल्स अदर्स, यू नो व्हाट एग्जैक्टली हाउ द मार्केट बिहेव्स विद देम. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कमर्शियल पेपर्स. नेक्स्ट कम इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. Certificate of deposits or CDs. Certificate of deposits क्या है? Suppose there are few high net worth individuals, कोई NRI है, म्यूचुअल फंड मैनेजर है, पेंशन फंड मैनेजर, हेज फंड मैनेजर, ठीक है, some big high net worth individual is there. ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें, and they are हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल, एंड बैंक इज रीचिंग आउट टू देम कि प्लीज गिव सम अमाउंट ऑफ मनी टू अस बिकॉज वी हैव सम ऑब्लिगेशंस टू मैनेज. यू नो बैंक्स की ऑब्लिगेशंस है. बैंक्स हैव टू मैनेज द कैश रिजर्व रेशो, बैंक्स हैव टू मैनेज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एंड अदर सच रेशोज. ठीक है, to manage these things sometimes what happens, banks are also running out of money, तो उनको भी बिजनेस तो चलाना ही है. तो वो क्या करते हैं, they reach out to the high net worth individuals, institutional investors, mutual funds and all, and ask them कि भाई give us 100 crore rupees as we have to maintain the cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, and we will give you some interest on it, and this interest will be more than the saving account. This is really more than savings and fixed deposits. ठीक है, deal is done, and on the basis of this, what banks will do? Banks will release the certificate of deposits. Banks will give them certificate of deposits that you have deposit this much amount of money with us, and we promise to pay you this much amount of money with accumulated interest, whatever it would be as it was decided. ठीक है, who all can do this? All scheduled commercial banks. All scheduled commercial banks are entitled to do this, plus all financial institutions. All financial institutions. All financial institutions means what? अगर मैं बोल रहा हूं कि ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मींस, दैट मींस कि कौन से वाले इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं मैं? हु ऑल कैन डू दिस? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, तो यू ऑल नो द शेड्यूल्ड कमर्शियल व्हिच हैव बीन लिस्टेड इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, बाहर जितने भी हैं वो सब बड़े बड़े शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं. यस दयानंद, दिस इज अबाउट सिडबी, नबार्ड. ठीक है, वो सारे जो है, सिडबी हो गया आपका, यस नबार्ड है,
और कौन से हैं, एग्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एंड ऑल, ठीक है, ऐसे तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑल दे आर बीइंग कॉल्ड एज, यस रिया, आरआरबीज आर नॉट इंक्लूडेड इन इट, ठीक है, हु कैनॉट, those who cannot involve in this, these will be RRBs and cooperative banks. They are kept out of it. They cannot issue the certificate of deposits. They cannot seek money from these institutional investors, mutual funds or BNRIs and all to manage their liabilities or obligations. ठीक है, RRBs and cooperatives have been kept out of it. ठीक है, नाउ देयर इज अ कंडीशन टू दिस, जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए मिनिमम इज 7 days and maximum is 1 year. ठीक है, दैट मीन्स इट इज अ शॉर्ट टर्म. कंपनीज लाइक मुथूट, नहीं मुथूट वाली कंपनीज में नहीं आती, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं भावना, दे आर आउट ऑफ दिस, दे कैन नॉट टेक मनी फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड ऑल. वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, वो ले रही होंगी किसी से काले धन के रूप में चुपचाप, किसी को बिना बताए, बट ऑन पेपर्स दे डू नॉट कम विद इन द स्कोप ऑफ दिस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. ठीक है, ये काम मार्केट में सबका चल रहा है, सब चुपचाप ले रहे हैं, देना लेना हो रहा है, जो भी हो रहा है, बट ऑन पेपर्स इट इज नॉट अलाउड. तो ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स लाइक HDFC बैंक, PNB बैंक, जो भी बैंक है, फॉर देम द मिनिमम इट इज 7 days एंड मैक्सिमम इट इज 1 year. ठीक है, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, फॉर ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिनिमम इज 1 year एंड मैक्सिमम इज 3 year. ठीक है, ये याद रखना है कि ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर अलाउड, बट RRBs and cooperatives are not allowed to issue certificate of deposits. ठीक है, and another thing is that the interest that these certificate of deposits are earning is much more than you have been earning through saving or fixed deposits. उससे ज्यादा इंटरेस्ट देंगे ये आपको. ठीक है, तो ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. अनदर थिंग इज, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, उससे पहले भी दे सकते हैं लोग वापस बैंक, बट सपोज कंपनी टाटा और कंपनी XY हैज गिवन 100 crore rupees to HDFC बैंक, and in return to that they have issued a certificate of deposits. The time period they have given is that yes, within 7 months we will repay you back with the amount of interest that we have promised to pay you. ठीक है, 7 months में. But now this XY company needs money back and 5th month में इनको लग रहा कि यार हमको तो बहुत जरूरत आ गई है, we have some orders in 5th month में, we want money. Now what they can do, HDFC bank is not going to give them because they have given a promise that 7 months के बाद तो हम दे देंगे. अभी के लिए what you can do, you can sell out in market, you can talk to other person, we can arrange something, you can sell in market, means you can sell your certificate deposits in market. A CD, a certificate is already being given there, you can sell out to someone else. ठीक है, HDFC का टाटा ने लिया था, वो रिलायंस को बेच सकता है, but they cannot take loan out of this. ये याद रखनी है. कैच इज बेसिकली होता क्या है कि इस तरह के जो डिपॉजिट्स की जो पर्ची छपी होती है, लाइक फार्मर गोज टू द मंडी में जो डीलर्स होते हैं, दे रिलीज्ड आउट अ स्लिप. इन दैट स्लिप इट इज क्लियरली रिटन दैट 2 lakh rupees आर पेंडिंग फ्रॉम मार्केट कमिटी एंड वी विल रीपे यू अकॉर्डिंगली. ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्लिप अ फार्मर कैन गो टू द कोऑपरेटिव बैंक एंड ही कैन टेक अ लोन आउट ऑफ इट. तो बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट होता है उसका, कि 2 लाख रुपए की अगर पर्ची है, मतलब एक स्लिप है, तो ही कैन टेक 1,50,000 and all. Although they have a slip of 100 crores, but they cannot take loan out of it from any bank. लोन नहीं ले सकते.
they can sell out this in a market. ठीक है. What is rising issuance by PSU bank 6% to nearly 70%? किसका? Are you talking about CDs? शिविया. Yes, देखो, if CDs are increasing, अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की जो परसेंटेज है दैट इज इंक्रीजिंग, व्हाट डज दैट मीन? इज इट गुड और इज इट बैड? बताओ, इज इट गुड और इज इट बैड इफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर इंक्रीजिंग इन बैंक्स? Bad. Yes, it's bad. Why bad? Because banks have a liability to park their funds in statutory liquidity ratio, cash reserve ratio and all. But now bank has to reach out to the bank. का काम क्या है? बैंक का काम है कॉमन मैन का पैसा to be parked in their accounts. ठीक है? तो if that means that they do not have money, means people are not putting their savings, people are not parking their funds or savings or money in bank or banking operations. अगर होता तो obviously bank would have used that, but इसका ये भी मतलब है कि people are now more consumeristic in their approach. They are consuming a lot and their savings are getting reduced, or there might be a possibility that we have a very high inflation due to which we are not being able to save up any money. सेव करेंगे तभी तो बैंक में रखेंगे, अगर बैंक में ही नहीं है तो obviously how the banks will run their operations. Here banks are giving out money to companies or otherwise? Banks are taking the money. वो आगे है तो आगे मैनेज करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, so that they could manage their liabilities and all. ठीक है, yes yes, ठीक है. तो इसमें कैच एक पॉइंट ये है that they cannot take loan out of it, they can only sell this in a market. बैंक्स खुद ही अरेंज कर देते हैं कि हमारे पास एक बंदा है जो आपका वो कर लेगा, आप जस्ट नेगोशिएट अपने पर्पस पे कर लो, अपने उस पे कर लो. अगर 100 करोड़ का था आपका तो 98 करोड़ में दे दो उसको, या जो भी है, मतलब जो डील बन जाए उनकी जैसी जरूरत हो वो चीज. बट बैंक डू नॉट गिव लोन्स ऑन दीज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. ठीक है, एक और चीज है ऐसी ही कुछ. चलूं आगे. Next one is debentures. एक और है जैसे debentures. Debentures, the name itself, this comes from debt. ठीक है, debentures क्या है? Suppose it is straight away that it is someone who is giving a debt to other company or other organization. डेट देना है इसमें पूरा का पूरा पैसा. सपोज कि मुझे somebody has अंबानी has 100 crores, या अंबानी कुछ और ले लेते हैं इसमें नाम, शाहरुख खान का नाम ले लेते हैं. शाहरुख खान has 100 crore rupees. ठीक है, शाहरुख has 100 CR and he is interested in giving a debt to some other companies. और यहाँ पे कोई कंपनी आती है, सपोज कंपनी X, एंड कंपनी X कंपनी को जो है he is interested in giving 100 crore rupees. So there are two possibilities the way he can give it. This is debt. एक है that it can give it in form of convertible debentures. Other is in form of non-convertible debentures. ठीक है, convertible debentures and non-convertible debentures. Convertible debentures means suppose Shahrukh Khan has invested 100 crore rupees, and if any company makes a progress or has made some significant improvement in the coming years, so there might be a possibility, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर एक प्रोविजन होता है कि that debt
can convert into stake. ठीक है, whatever 100 crore rupees you have given to them as a debt in which they have agreed to pay the interest on that also, this will convert into a stake. तो उसके अंदर क्या होगा, you have already entered into this, if the company grows then I will acquire the ownership. ठीक है, मैं कन्वर्ट कर लूंगा अपने डेब्ट को स्टैक में. If company is turning out to be a poor in terms of prospects, then I will run away from it, I will take my money back and this works like this. ठीक है, स्टेक, यस, स्टेक मतलब हिस्सा. ठीक है, सम शेयर्स, अगर 100 करोड़ रुपए का वो है, कंपनी इज नाउ द वर्थ ऑफ 2000 करोड़, तो ऑब्वियसली सम शेयर तो उसी का बनता है ना, तो दैट गेट्स कन्वर्टेड, ही और शी कैन कन्वर्ट इट एनी टाइम. ठीक है, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में द मनी दैट हैव बीन लेंट, इट डू नॉट कन्वर्ट, मनी लेंट डू नॉट कन्वर्ट इनटू स्टेक्स और शेयर्स. ठीक है, इसमें कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जो है, इंटरेस्ट रेट इज लेस, इंटरेस्ट रेट इसमें थोड़ा लेस होता है, बिकॉज दे आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ ओनर, तो ऑब्वियसली द इंटरेस्ट रेट लेस होगा. यहां पे इंटरेस्ट रेट इज हाई. ठीक है, दिस seems to be less risky and this seems to be high risky. ठीक है, this seems to be less risky, this seems to be high risky, and both these convertible debentures as well as non convertible debentures, they can be traded in exchange, they can be traded in exchange. There are multiple platforms that are available to buy and sell non convertible and convertible debenture. जीरोधा हो गया, फायर्स हो गया, ठीक है, लॉट ऑफ, बहुत सारे हैं यहाँ पे. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी मार्केट. And remember this in the last one when I was talking about the certificate of deposits. These certificate of deposits are not sold out in exchange. Exchange में नहीं थे वो. They have been sold out in open market. कहीं आ रहा खरीद रहा है, ठीक है. But these ones, these are the ones which are traded in exchange. इसमें फर्क है. Exchange is the secondary market. जिनका इकोनॉमिक्स पूरा हो गया है, they might have this information about the primary market or secondary market. ठीक है, आप लोगों ने अगर पढ़ लिया है तो ठीक है. तो दिस इज अबाउट द सेकेंडरी मार्केट. तो दीज डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, दे कैन बी ट्रेड इन एक्सचेंज, दैट इज द सेकेंडरी मार्केट. क्योंकि यूपीएससी में सेकेंडरी, प्राइमरी, दीज आर द टर्म्स दैट आर बीइंग फ्रीक्वेंटली यूज्ड. तो उसमें कोई कंफ्यूजन होने जैसा कुछ नहीं है कि कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि सेकेंडरी मार्केट बोला था या एक्सचेंज बोला था, क्या बोला था. ठीक है, करो इसको, इफ यू वांट राइट करो इसको. फिर एक और होता है एसआईपी, के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा. SIP is basically the system investment plans. Are SIPs risky or not? Anuke says SIPs are not risky. What about others? Yes, Shivya is saying yes. Okay. Others, market dynamics, okay. Less risky. हाँ, रिस्की है वो, लेस रिस्की कह सकते हो आप. बट एक और चीज है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स ना, ये लेस रिस्क, हाई रिस्क, लेस, मोर, दीज टर्म्स हैव ऑलवेज बीन यूज्ड इन रेफरेंस टू समथिंग. ठीक है, इसको ध्यान से देखना, जब क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी समझना इस चीज को कि इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट दे हैव बीन आस्किंग दीज थिंग्स. सपोज मेरे पास एक तरफ है एसआईपी प्लान है. एसआईपी की एड भी आती है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जल्दी से बोल के निकल जाता है वो. प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली. अगर आपने वो देखा तो वो कह रहा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क.
ठीक है, अनदर इज बैंक एफडी। ठीक है, इसमें क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में यू आर रिकरिंगली मेकिंग सम इन्वेस्टमेंट्स इनटू इट, 1000 रुपीज, 2000, 1 लाख, वट एवर यू कैन अफोर्ड। ठीक है, इसमें दिस इज रिस्की। Why it is risky? Because it is subject to the market dynamics, or market will decide कि what exactly will be the scenario in the coming days. ठीक है, there might be a possibility कि market ऊपर की तरफ उठती जा रही है, तो your SIPs are increasing, your SIPs are returning more money to you. But there might be a case कि entire country is in the deep recession or in deep tension. So obviously in that case your SIP will also falter out. ठीक है, वहीं दूसरी तरफ बैंक का एफडी है। बैंक का एफडी क्या है? नो रिस्क, वट एवर द सिचुएशन इज यू विल गेट द फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, अगर बैंक ने बोला है एफडी करा लो, आज 10 लाख रुपए दो, 5 साल बाद 20 लाख रुपए दो, तो नो रिस्क इज देयर। एफडी इज द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। ठीक है, तो इट इज नो रिस्क, नो रिस्क बोल दिया, लेस रिस्क भी नहीं बोला, नो रिस्क। अब जब क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बिटवीन द एसआईपी एंड बैंक एफडी, तो देयर माइट बी हाई, देयर कैन बी अ इशू दैट यू कैन से कि दिस इज हाई रिस्क। तो हाई और लो ये पता चलेगा जब किसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन कुछ ऐसा घुमा के पूछ रहे हैं कि इन रेस्पेक्ट टू बैंक एफडी आर दे लेस रिस्की, हाई रिस्की, मोर रिस्की एंड ऑल, तो तब वो मोर रिस्की हो जाएंगे, हाई रिस्क हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, एफडी में इंटरेस्ट इज फिक्स्ड, इसमें द इंटरेस्ट इज नॉट फिक्स्ड। इफ इकोनॉमी इज मूविंग, इकोनॉमी अगर मूव कर रही है तो गुड, अगर इकोनॉमी इज डाउनग्रेडिंग तो यू कैन हैव अ नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है रिजल्ट। यू माइट हैव इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज एंड एज एन, जैसे कोविड में था, कोविड में तो नीचे की तरफ जा रही थी, अगर दिस कंटिन्यूज फॉर 10, 15, 20 years, so what will be the impact? The entire SIP will fall down. Yes, if long term plan, ये long term plan भी देखे, हमें ये देखना पड़ेगा कि in which economy or in which areas you are investing. Suppose the same SIP in Africa, long term में तो देखिए हर इकोनॉमी जो है, कोई भी इकोनॉमी हो, किसी भी देश की हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, अमेरिका हो, कोई घाना हो, लॉन्ग टर्म में ऑल इकोनॉमीज आर मेकिंग सम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। हो सकता है कि दे आर नॉट वेरी फास्ट, दे आर नॉट द इकोनॉमिक इंजन्स, बट ओवरऑल सभी के सभी ग्रोथ ही कर रहे हैं। पाकिस्तान भी ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, अभी उनका जीडीपी पहले कुछ और होगा, बाद में आगे अगले साल कुछ और होगा, चाहे 10 ही रुपए बढ़ा होगा, लेकिन बढ़ा होगा। सम ग्रोथ माइट हैव बीन देयर, सो इन लॉन्ग रन इट इज प्रॉफिटेबल। यू डू एसआईपी, दैट्स गुड। ठीक है, सबको करना चाहिए अगर कुछ कर सके तो। यस, अच्छी बात है, इफ यू कैन मैनेज ऑल दीज थिंग्स तो ठीक है। दिस इज अबाउट द फाइनेंशियल लिटरेसी। ओके, कांग्रेट्स शुभ्रा, यू टू, इंस्टेड ऑफ ईटिंग जंक यू आर पुटिंग योर मनी। ओके, ठीक है, अच्छी बात है, फाइन। ठीक है, ओवर, चले आगे। मूव करेंगे, बुढ़ापे में पैसा आ रहे, अभी जवानी तो जी लो, बुढ़ापे तक पहुंच गई हो तुम्हें। चलो आओ, couple of you students were talking to me about this alternate investment funds, although I have explained it, लेकिन फिर से बता देता हूं एक बार। alternate investment funds, alternate investment funds, देखिए we have traditionally we have many ways of investing our money, like बात की हमने फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, म्यूचुअल फंड्स, these are the traditional ways, and now we have a alternate investment fund which is considered as the new means of investing. और इसमें इन्वेस्टमेंट के क्या है, this has been divided into 3 categories, 3 categories है। the first category is here, category number 1. Category number 1 means this category is something that helps economy
to revive, or that helps economy to have positive prospects. इकोनॉमी का फायदा होता है इस कैटेगरी 1 में, ठीक है. ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में क्या है? बेसिकली इट इज द पूल ऑफ इन्वेस्टर्स हु वांट टू इन्वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. मिनिमम इसमें 1 करोड़ रुपए, मिनिमम इसमें 1 लाख रुपए है, ठीक है. एंड कैटेगरी 1 मींस द इन्वेस्टमेंट व्हिच इज गोइंग टू हेल्प इन द इकोनॉमी. तो फर्स्ट है इसमें एंजल फंड्स. एंजल फंड्स क्या है? सपोज यू हैव अ प्लान and you are interested in starting a company, or you are the one who has just started a company. You have shared your idea with someone who is a good, well established entrepreneur, or he or she is interested that yes, you have a good idea and we also are on the same page. We think that yes, this business can grow, so they will invest in your company. So this is called as angel funds. ठीक है. Next is venture funds. Venture capital funds or venture funds. Suppose you have been making some growth in the last 1 or 2 years. Every year you are making growth. On the first year you have made 1 crore, second year 2 crore, 3 crores. Like Edukemy में भी कुछ venture fund capital लिया है, ठीक है. We have shown to those investors कि yes, we have this much amount of students with us. They have been passing this examination, and couple of them have secured good ranks. We have a good prospect. On the basis of this, we have also sought some money. This is called as venture funds. Okay. Once you have taken off, once you have established yourself, you have shown that we are in the good books, we are making some profits, then you can reach out to some of the investors. Like Shark Tank में मैंने बताया था कि Shark Tank वाले जो बैठे रहते हैं उसमें मैं नाम भूल गया उनके यार, अश्विनी ग्रोवर and all, they are also giving the funds on the basis of this fact कि how much your company is making out profits. तो उसी को वेंचर फंड्स बोल देते हैं. तीसरा है आपका इन्वेस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स. इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मींस देयर आर फ्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन विच गवर्नमेंट इज रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट, ठीक है. और मैं बता रहा हूं कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कोई भी गवर्नमेंट का पैसा नहीं है. दीज आर द पूल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स. याद रखना, प्राइवेट इन्वेस्टर्स ओनली. ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स मींस देयर आर फ्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन विच द गवर्नमेंट इज रिलेक्टेड टू इन्वेस्ट, एंड नाउ अगर किसी को समझ में आ जाते हैं तो दे इन्वेस्ट इनटू दैट, एंड दिस इज आल्सो कम विद इन द कैटेगरी ऑफ कैटेगरी 1 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स. चौथा है आपका सोशल फंड्स. सोशल फंड्स मींस you are investing the money in some rural habitation, in some housing projects in villages, or there might be, because the village does not have any schools, so you are investing in the money in that establishment of schools also. So these are comes within the social funds, because here profit is not a motive, you are just doing it for social service. ठीक है. तो ये 3-4 तरीके के फंड है that comes within the category 1. What is the difference between angel and venture? Angel fund is like जैसे मैं हूं, सपोज करो मैं अब यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है, and I am requesting all of you कि from tomorrow onwards I am going to start a company, and you all have seen me कि मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे और तुम्हें भी समझ में आ रहा सब कुछ. Let's come and make a company with us. From tomorrow onwards I am going to start this company, and on the basis of trust, or on the basis of their if you think yeah, yes, I think this man is going to create a company, that company is definitely going to boom out in the future, तो मैं पहले से इसमें कुछ फंड कर देती हूँ या कर देता हूँ. ठीक है. तो that is the angel fund. You turned out to be an angel for me. ठीक है. Picking me from scratch. कुछ पैसे मैं भी लगाऊंगा ऐसा नहीं है, बट हाँ कि ये है कि आप लोगों ने दे दिया. Venture funds means like मैंने एग्जांपल दिया कि Edukemy from the last few years is making profits. So these profits they have shown it to the angel fund में friend हो सकते हैं, family हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. And like मैं बता रहा था कि venture fund means like Edukemy is making profit from the past few years consistently, on every year जो है we balance sheet is in a positive. So this is being shown to some of the investors कि हम consistently profit कर रहे हैं, and there is a possibility that in the coming days we are going to start some new batches या new courses that will help us to grow also. So there is a high possibility that we will be on the good side.
तो प्लीज गिव सम अमाउंट ऑफ मनी, वही जो शार्क टैंक में लोग करते हैं। एंजल फ्रेंड्स में फ्रेंड भी हो सकते हैं, अननोन भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज द कैटेगरी 2। कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 में आ जाओ। कैटेगरी 2 मीन्स द प्राइवेट इक्विटी फंड्स एंड डेब्ट फंड्स। ठीक है, डेट फंड्स तो नाम से पता लग रहा है, मींस गिविंग अ डेट टू समवन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉफिट इज बीइंग, आपने कुछ शुरू किया, आई हैव गिवन यू अ डेब्ट ऑफ 10 crore rupees and there is a clear agreement between me and you that you have to pay me 2 lakh or 10 lakh of interest every month and this is a debt fund, that's it। ठीक है, straight away। प्राइवेट इक्विटी फंड्स क्या है? सपोज देयर इज अ कंपनी दैट इज अनलिस्टेड, ये याद रखना आप, प्राइवेट इक्विटी फंड्स में initially there is an unlisted company. Unlisted means it is not listed in a stock exchange, and somebody is investing or somebody is pumping in 100 crores 200 crores in this company. Now this company has become a very big company, वो बोलते हैं सिक्स सिग्मा टाइप। ठीक है, बहुत बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ उनका जो है आपका वर्थ हो गया है। तो नाउ once this company has grown, it has, the company owner has become billionaire. Now they are looking forward to get listed it, and now they are listing themselves in a stock exchange so that they could release out or issue IPOs। ठीक है, दूसरे का पैसा लेके कंपनी को बड़ा बनाया and then they have issued IPOs। IPOs means common man like me, you, everyone moving on the streets, they can invest in this company। अब होगा क्या, धीरे धीरे the common man, once it is listed, common man here, they have started giving money to it as they are buying the IPOs। So as they are buying the IPOs, slowly and gradually they will take an exit। उन्होंने जो प्रॉफिट पैसा लगाया था, whatever the profits, whatever the principal amount, they will take it away and exit from this group, and now the entire money is of local or the normal man who is investing in form of IPOs। ठीक है, समझ में आई ये बात? चलूं आगे, इसमें कोई इशू तो नहीं है? फाइन। थर्ड वन इज, कैटेगरी थर्ड भी है। कैटेगरी थर्ड क्या करती है? कैटेगरी थर्ड इज द मोस्ट रिस्की, दे इन्वेस्ट ओनली इन द रिस्की प्रोजेक्ट्स। ठीक है, दे इन्वेस्ट ओनली इन द रिस्की प्रोजेक्ट्स। वो कौन से हैं? वो है आपके हेज फंड्स। दे इन्वेस्ट मनी इन स्टॉक मार्केट्स, देयर प्रॉफिट्स एंटायरली डिपेंड ऑन द अप एंड डाउन मूवमेंट दैट इज हैपनिंग इन द स्टॉक्स। ठीक है, वो बाय करेंगे गोल्ड, दे कैन बाय इन डेरिवेटिव्स। ठीक है, दे विल बाय एनी इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स एंड ऑल। तो ये जो स्टॉक मार्केट से जो पैसा कमाना है ना, वो सबसे ज्यादा रिस्की है, मतलब सबसे ज्यादा टफ है। तो दैट इज व्हाई दिस कैटेगरी कम्स विद इन द कैटेगरी 3, द हेज फंड्स हु आर इन्वेस्टिंग द मनी इन स्टॉक मार्केट, गोल्ड, डेरिवेटिव्स, इंडेक्स एंड ऑल। जीरो कूपन फंड्स बेसिकली इसमें नहीं आते हैं। These are the zero coupon funds can be even issued by a government. गवर्नमेंट भी इशू करती है जीरो कूपन बॉन्ड्स, बट इन द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स गवर्नमेंट नेवर गिव्स मनी टू एनीवन। Alternative investment fund is a pool of private investors who are high net worth individuals who have enough money to invest and who are looking for high profits depending upon in which category they wanted to make investments. You invested money in gold in the month of January and in gaining position. Okay, अच्छी बात है, ठीक है. Yes, what is written below private equity funds?
प्राइवेट इक्विटी फंड्स के नीचे लिखा है डेट फंड्स, ठीक है, डेट फंड्स। चले, हो गया आपका। वेंचर फंड, वेंचर फंड के नीचे लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, सोशल फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, सोशल फंड्स। ठीक है, चल रहा हूं मैं आगे। द नेक्स्ट वन इज द मैप एक्सरसाइज ऑफ फ्यू रिवर्स। धीरे धीरे इसमें इन्हीं क्लासेस में हम लोग रिवर्स का जो मैपिंग है वो भी कर लेंगे, एंड अदर सच मैपिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट। So today I am going to do the mapping of few of the rivers of Odisha. Okay, so this is Jharkhand. This is Odisha, ठीक है, and on this side we have a Chhattisgarh, ठीक है, we have Jharkhand, we have Chhattisgarh, and we have a Odisha here. So from 28 January geography marathon series also starting for prelims. ठीक है, उसमें कुछ जो होगा वो होगा, अभी ये देख लेते हैं, ठीक है। सो द वन इंपॉर्टेंट रिवर यहां से, दिस रिवर इज संक एंड दिस इज कोयल, दिस इज संक रिवर एंड दिस इज रिवर कोयल। बोथ द रिवर संक एंड कोयल merges in Odisha, and thereafter this river becomes Brahmani, ठीक है, this becomes Brahmani river. Brahmani river has been asked once in the UPSC previous papers. बड़ा लिख देता हूँ, इसको छोटा लग रहा है मुझे, ठीक है। दिस इज यहाँ लिख देता हूँ ब्राह्मणी रिवर, ठीक है। एक और रिवर है दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम रांची, यहां पे इट विल मूव लाइक दिस, थोड़ा सा इट विल एंटर इनटू द बंगाल आल्सो, एंड देन इट ड्रेन्स इट्स वाटर इनटू द आपका ईस्टर्न साइड में। दिस इज रिवर सुबर्णरेखा, एंड दिस रिवर सुबर्णरेखा इज फेमस फॉर गोल्ड डिपॉजिट्स, ठीक है। एक और छोटी सी रिवर है विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स यहां पे, एंड दिस रिवर इज कॉल्ड एज बुद्ध बलंग, बुद्ध बलंग, ठीक है। A small river originates from somewhere here. This is a tributary of river Brahmini. This is called as Baitarni. Baitarni is the tributary of Brahmini, ठीक है, समझ में आ रही है, यहां तक तो क्लियर बना हुआ है। Now you know in Chhattisgarh here we have a Amarkantak plateau, Amarkantak plateau, and Amarkantak plateau, Sihova district, Chhattisgarh. This is the origin of river Mahanadi. तो यहां से निकलेगी रिवर महानदी, एंड
सब मूव करके एंटर करेगी. बिफोर इट वी हैव सम ट्रिब्यूटरीज. दिस वन इज रिवर सेवनाथ. Another tributary is here, that is Jonk. यहाँ पे this is another tributary, that is Hasdev. Another tributary here, that is Mand. ये फिर ऐसे जाके ऐसे घूम के और ये भी discharging its water into the Bay of Bengal. This is river Ib. We have Ong. This is the left bank tributary, and we have a Tel also. Tel is also a right bank tributary of river Mahanadi. ठीक है. यहां पे एक इंपॉर्टेंट डैम भी है, दैट इज हीराकुड रिजर्वायर. हीराकुड डैम. और यहां पे है एक रेनेगल रिजर्वायर. ठीक है. हीराकुड डैम, रेनेगल रिजर्वायर. इसमें एक और है रिवर ईस्टर्न घाट से ही, दैट इज ऋषिकुलिया. River Rishikulia, and on the banks of Rishikulia, olive ridley turtles are known to give birth to their young ones. Famous है ये भी, olive ridley turtles. Another river which originates from the southern Odisha in eastern Ghats, this is Vamsadar. Vamsadar has been asked once, along with Brahmani as well as Subarnarekha. There is another river here, that is Nagvali. This is Nagvali. This has also been asked once in UPSC. ठीक है. फिर यहां से ये जो है ये आपका आंध्र प्रदेश है. Another river is ये आंध्र प्रदेश है. ठीक है. अनदर इज, यहां से एक और रिवर इज ओरिजिनेटिंग, दिस इज इंद्रावती, एंड दिस इंद्रावती इज जॉइनिंग रिवर गोदावरी. जब गोदावरी करेंगे तब के लिए याद रखो आप. ठीक है. एंड वी हैव अ स्मॉल रिवर हेयर ऑल्सो, दैट इज सबारी. दिस एंटर्स इनटू आंध्र प्रदेश एंड देन जो है फाइन. So I have covered almost every river that has been asked in the previous UPSC examination, especially the rivers of Mahanadi, Subarnarekha, Baitarni, Brahmini, Rishikulia, Vamsadar and Nagavali. All these rivers have been asked once. Although the questions were simple, but simple question को करने के लिए भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए, then only you will be able to mark the correct or wrong. ठीक है. You must know the left bank tributaries and right bank tributaries of Mahanadi. क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आते हैं आजकल. Which of the following are the left bank tributaries, right bank tributaries and all. बनाओ इसको और बताओ मुझे. Done everyone? ठीक है. दीज रिवर्स आर इंपॉर्टेंट क्योंकि पूछी जा चुकी हैं और 3-4 साल हो गए हैं, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट दे कैन बी आस्क्ड एनी टाइम नाउ. ठीक है. फॉर रिवर्स यू मस्ट try to draw the maps with your hands, then only you will be able to remember and memorize what exactly was the
left bank tributary, what is the right bank tributary of these rivers. ठीक है. If you are done with this, then we are ending the session here. Irrespective how much hard I am trying to learn these rivers, getting hectic for me. I have been planned to only prioritize PYQs on drainage and skip rest. वही काफी भी है. PYQs हैं जो river PYQs नहीं. You have to be master of all the rivers that have been asked in PYQs. प्रैक्टिस से सब हो जाएगा. मैप बना के रख दिया है, 2-3 बार बनाओगे तो हो जाएगा. आई डोंट थिंक ये इतना मुश्किल है. ये अ मैन सफर्स मोर इन फिक्शन देन इन रियलिटी. वो मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है. ठीक है. मैन मीन्स बोथ मैन एंड वुमेन. ऐसा नहीं है कि ओनली मैन. इट इज एप्लीकेबल टू गर्ल्स एज वेल. ठीक है. यू गाइज आर सफरिंग मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी. तो एक बार प्रैक्टिस करो, 2 बार हो जाएगा. ये बना के तो दिखा दिया, अब क्या मुसीबत है इसमें. सीधी लाइन बना के खींच के दिखा दी है पूरी स्टेट्स पे. मैं चाहता तो इंडिया का मैप पे भी दिखा देता इसको. ठीक है. ओके ओके ओके. बाय. गुड बाय. थैंक यू.